Windows is more than just an operating system. It is a fabric woven into our lives and in our work. It is where we connect with people. It is where we learn, work and play. Over time, remained familiar and adapted to us. Hello everyone, this is Prince Yadav. You are watching All the Best channel. तो आज की वीडियो में बताऊंगा कि विंडोज़ का हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस है। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आज मैं आपको विंडोज़ का एवोल्यूशन बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। विंडोज़ 1.2 हमारा सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था। यह विंडो 20 नवंबर 1985 को रिलीज हुई। इस विंडो में कैलकुलेटर, कैलेंडर, क्लॉक, नोटपैड, पेंट जैसे प्रोग्राम्स को यूज किया जा सकता था। तो अब हम बात करते हैं विंडोज 2.0 की, जो रिलीज हुई थी 9 दिसंबर 1987 को। इस विंडोज में हमें कीबोर्ड, शॉर्टकट्स और मिनिमाइज, मैक्सिमाइज जैसे ऑप्शंस भी देखने को मिले। चलिए चलते हैं विंडोज 3.0 की तरफ। यह विंडो रिलीज हुई थी 22 मई 1990 को। यह विंडोज आपको 1.0 और विंडोज 2.0 से अपग्रेडेड मिली थी। इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप जैसे फीचर्स देखने को मिले। इस विंडोज के आपको 3 मोड मिले: रियल, स्टैंडर्ड और एनहांस्ड। आपको विंडोज 3.1x देखने को मिली, जो कि 6 अप्रैल 1992 को रिलीज हुई थी। अब देखते हैं विंडोज NT 3.1, जो कि रिलीज हुई थी 27 जुलाई 1993 को।
उसके बाद विंडोज 95 लॉन्च हुई 24 अगस्त 1995 को। और फिर विंडोज NT 4.0 SP1 जो कि विंडोज 95 के ठीक एक साल बाद लॉन्च हुई, यानी 24 अगस्त 1996 को। तो अब विंडोज 98 जो कि लॉन्च हुई मई 15, 1998 को। नेक्स्ट विंडो 2000 प्रोफेशनल अगेन लॉन्च हुई 17 Feb 2000 में। इसके बाद सेम ईयर विंडोज मी भी लॉन्च हुई 19 जून को। उसके बाद 2001 में 24 अगस्त को विंडोज XP लॉन्च हुई। और 8 नवंबर 2006 को विंडोज विस्टा लॉन्च हुई। तो अब आई थी विंडोज 7
नए अपग्रेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। विंडोज 7 से पहले कोई भी इतना दमदार ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बना था और यह लॉन्च हुई थी अक्टूबर 22, 2009 को। विंडोज 7 के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत से रेवोल्यूशन आए और ऑपरेटिंग सिस्टम्स अपग्रेड होते चले गए। तो अगली विंडोज की बात करते हैं, जो कि है विंडोज 8, रिलीज्ड ऑन 1 अगस्त 2012। अगले ही साल एक नई विंडोज 8.1 लॉन्च हुई थी ऑन 27 अगस्त। इसके बाद आई विंडोज 10 on 10th जुलाई 2015, जो कि सबसे ज्यादा मार्केट शेयर रखती है ऑफ अबाउट 55%। तो अब मैं आता हूँ अपने मेन टॉपिक पर, जो है विंडोज 11। विंडोज 11 has been launched on 24 June 2021। तो चलिए चलते हैं विंडोज 11 की तरफ। Windows 11 also give you a more natural way to connect with friends and family through Teams, allowing you to instantly mute and unmute or start presenting directly from the taskbar. When you use Windows 11 on a tablet without a keyboard, we have improved the experience for touch, creating more space between the icons in the taskbar, adding bigger touch target and subtle visual cues to make resizing and moving windows easier, as well as adding gestures. If you are a gamer, Windows 11 is made for you. Gaming has always been fundamental to what Windows is all about. Today, hundreds of millions of people around the world game on Windows and find joy and connection with loved ones and friends through play. Windows 11 unlock the full potential of your system hardware.
putting some of the latest gaming technology to work for you. Like DirectX 12 Ultimate, which can enable breathtaking immersive graphics at high frame rates. So it is suitable for gamer. At a time when the PC is playing a more central role in our lives, Windows 11 is designed to bring you closer to what you love. Windows 11 will be available as a free update to Windows 10 customers. This means that if you run a Jan 1 Windows 10 copy on your computer, you will be able to download Windows 11 without having to pay anything extra. However, for fresh installation, Windows 11 may cost you. Now you can download and enjoy the new upgraded version of Windows 11. अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन भी दबा देना जिससे कि आपको नई और इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। बाय बाय।